Okay, so what we did, we shifted from TC to Visual Studio Code, and if we are shifting from this to this, that we know it that VS Code is requiring the GCC compiler, right? GNU C compiler. So now if you're using GCC, obviously some of the things have been modified, like we have started with hash include the iostream.h file. You know, the syntax has been get changed, and we shifted from that hash include into something called as a include and bracket, open less than and greater than sign, so close bracket that, and you have to just write iostream. So basically what is the iostream? Iostream is nothing but a class, right? So you are dealing with a class, right? So we are getting this as a class, so that's fine for us. So now what happened, some thing that we are going to learn today is how can you define a class in C++, right? So whatever we have studied it is in Java. So Java has got everything is embedded within a class, right? That we have studied. Whatever method you declared, whatever things you are going to declare, एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड है, और लेट्स से देर आर 2-3 methods, but all they are embedded, all they are enclosed, or you can say all these are binded within the same class. So it should be in the class. Whatever you are doing it should be in the class, and that's why we can say that Java is 99%, 99.99% object oriented programming. Now, once you are talking about object-oriented programming, everything should be treated as a class and object, fine. But now in C++, what happened? C is nothing but a structure-oriented language, right? Now, once we are talking about plus plus is giving us the OOPS property, object-oriented programming property, where you can see the, right from how can you define a class, then objects, then how can you hide the data, then how can you inherit the property, and so on and so forth. A lot of things are there. So one thing is recommendation for you people, right? What we can do, let me first present my screen, and I will give you some tips to learn the things from where, right? So as you are not in the college, so you cannot access the basic, or you can say the recommended books for you. Now the recommended book, as I told you, that there is a book for C++, right? Given by Yashwant Kanetkar. Yashwant Kanetkar book is very nice one, right? So even though you refer Balguru Swami and so forth, so, and actually from my side, what I'm recommending, I am recommending that do not refer any kind of book. As I told you, from if you consider my example, right? So I survived in industry for 3 years as a Java programmer. Then, since 2000 up to here, I am doing a lot of programming in Java and so forth, right? Still I can, I will tell you frank thing that I have not referred any kind of book. Then you will, immediately say, सर आपने कुछ बिना बुक पढ़ के आप ऐसा कैसे प्रोग्रामिंग करवा के लेते हो, right? The thing is, my dear friends, that whatever skill you want to do it as a hands on, I am recommending that go for the documentation. Go for the documentation. So documentation makes man perfect instead of reading the books. We do not want to make ourselves as a bookish student. ये definition by heart है, कितना data types है, ये है वो है yes, everything I know it. बट इफ आई आस्क यू, चलो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने का है और क्लाइंट को डिलीवर करने का है, राइट? एंड देन द थिंग्स हैपन दैट अभी मैं कैसे क्लासेस बनाऊं, उसका क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स कितना बनाऊं, कैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करूं, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म ले लूं, कितना मेथड ओवरराइड करने का है, कितना कितना मेथड ओवरलोड करने का है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. If you are thinking on this particular point of view, then your book is not going to give you any kind of idea. The book is not giving to give you any kind of idea. So what you have to do? So there are, as I'm telling you, there are a lot of websites, right? So I think Aditya, can you see the screen? Hello? Or anybody? Hello. Yes, can you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. So see, this is the one thing that I'm going to tell you. So everybody aware of this website, w3schools.com. Yes, sir. Yes. So I think this is the best website, right, as I ever seen, right? Because it's seen from the in 90s, in 1995, 98. This website came into the picture, so right from that point of view, this website is so much stable website. So whatever technologies you are going to learn it, so these are the some kinds of things they are given you very nice. So I have put it in the chat box also, right? So if I want to study C++, if I want to study HTML, JavaScript, SQL, Python, so and so bootstrapping, and there are lots of things are there where you can able to learn it from this, and as well as they are providing you the certification course as well. Right. So, what I'm recommending that we are not depending on any kind of this thing, only refer W3 schools or only refer that thing, only refer that thing, not like that. So it's a helping tool for us. Let's say I want to show you, what is the meaning of classes and object in C++. How can you declare it? How can you declare it, right? So if I want to make it like this, so this is the way that I can able to declare the class in C++. In C++ I can declare like this. Okay, so let's see the things that I open this, and let's go over here. I will say demo1.cpp. This is my program, and over here I want to just write the program like this, that I want to put a class. So first of all, let me first put like this. So अभी देखो हम लोग we are jumping from C++ to Java, again Java to C++, right? So do not make any kind of mistake like this. What kind of syntax it is there in Java, in C++. So please take it in consideration. And also we are over here, we are using GCC. So GCC is again important for us. Are you getting? So this is very important. So let's say I define a class. Now my class name can be anything. Let's say my class name is student. My class is student, right? Say, and let's say uh, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है. सो आई थिंक ओवर हियर आपको मुझे थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा. आदित्य and Kushal and other students, are you there? What I'm telling you? Yes, sir. And not Yes, only sir. these Yes. students, all the students, you have to help me in this particular case, that you should tell me, बिकॉज सी प्लस प्लस में मुझे लगता है आदित्य ने काम किया है, आदित्य और कुशल और इसमें ये लोग ने. सो व्हाई इट इज नॉट गिविंग मी द परफेक्ट थिंग. So after name place std, I have to give the semicolon, right? So I think over here, yes, I have to put semicolon. Now let's say over here I declare the variable integer, right? Like that. Okay. So let's see that I'm having this roll number. Roll number is 1, or let's say we will put it over here. Now what happened? After creating a class consists of what? Class consists of what? Members. Now what are the members? Members can be variables, members can be methods or functions, right? So these are the kinds of members. So I will write here members in class, in C++ class, right? And over here I have to complete it by giving the semicolon. The semicolon is necessary. Semicolon दिया नहीं था, इसके लिए वो रेड कलर का एरर आया था. So after defining a class, I have to give the semicolon, right? And then I start with my main. So just see the example in case of Java, you are having whatever methods and everything which is there within a class. Over here, over in C++, your main method is outside the class. Outside the class. Very, very important, right? It's very, very important. So let me check, what are the things are given over here. Actually I'm also doing so many kinds of things, right? Now I'm working on Flutter and Dart.
So excuse me, lot of syntax are for here and there. So I have to take a help of something, right? So let's see, this is fine. Over here I have to write like public. So this public is very very important, right? Correct, this syntax is correct. So there are something called as access modifiers. These are something called as access modifiers. Now what is the meaning of access modifiers? कि पब्लिक के अंदर जो भी मैं लिखता हूं और लिख रहा हूं, this can be used anywhere in the program. Why? Because it is public. Now if I bifurcate the access modifiers which are there in C++ and access modifiers which are there in Java, so you will find out the access modifiers, they are same, but the difference between the access modifiers, there are a lot of, or you can say the vast difference is there. There is a vast difference that we will see. Just now we will see it. Okay, let's talk about this particular thing. Let's create an object of a student class. Let's say S1 is the object of student class. Now what we will do, we will just say C in, let's take the value C in S1 dot roll number. So I can access it within using the object. I can access this particular member using the object. Object is what? S1, right? And after doing this, let's print it. Let's print it. Okay. So let's see this. I think इतना छोटा सा प्रोग्राम है, देखते हैं रन करते कैसे कर देंगे. So it is running, right? It is running. Now I want to enter the input, and there is something like error. Main is there. It must return int. So over here I have to return the int value, right? Fine, no problem. So it's running now. Let's see. I think now I require the help of Aditya or this thing. Aditya and hey, other students, please tell me how can I run this over here? इंट मेन वापरला असेल तर रिटर्न पण टाका ना. ओके, रिटर्न 0 करून टाकूया चला. काही इश्यू आणि नाही सर मला. कोड रनर घेतलाय तुम्ही? हा काय? ओके, मग त्याचं सेटिंग्स मधून तुम्ही हे करा ना, टर्मिनल मध्ये रन करायला. नाही, सेटिंग्स मध्ये कोड रनर टाका. सेटिंग्स एक्सटेन्शन मध्ये सेटिंग्स सेटिंग्स प्रेफरन्स सेटिंग्स खाली बघा, ते बॉटम कॉर्नर. ओके, हा कोड बोल. रनर कोड रनर सर्च करा. ओके, खाली या. टर्मिनल मध्ये रन करण्यासाठी त्याला टिक करायला लागेल. अच्छा. हा नाही तो नाही. हा आहे ना, हा काय कोड रनर ना का नाही? नाही असं आहे, कोड रनर इन टर्मिनल. कोड रनर इन टर्मिनल बघ. हा आता हा का? करा. हा आता रन करून बघा. ओके 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 ओके. So shall I go for this? So we are doing demo 1, right? क्लोज येस. करा. Code is running. I think code is running. नाही येते ना? येस. परत एकदा बघतो.
Just I will open the VS Code again. Anybody has done this? वरद वगैरे तुम्ही प्रोग्राम केलाय का याच्यामध्ये C++ मध्ये? हो. रन पण झालं, एक्झिक्यूट पण झालं. रन पण होतं. ते कोड रनरला हे करायचं आहे. मी तर परत एवढं विसरलो रे. Wing W वगैरे टाकलं ना तुम्ही. रन कोड आता रन कोड करू का? हो सर करा. I think settings is there ना. ठीक आहे, थांब जरा. ओके, बघ काय आलं आता रन होईल सर. आता रन होईल सर. आधी तुम्हाला वाटते पॉवर शेलनी रन होत होता. ओके. Is it running or I have to click over here? सर ह्याच्यामध्ये टर्मिनल मध्ये तुम्ही स्वतःहून टाका ना ./demo1. ओके, थांब आता परत what I have to write here. ./demo1. That's it. ओके, ./demo तसे exe फाईल तर तयार झाली आहे माझी, बरोबर आहे. हां, आय थिंक झालेलं पण आहे. I will say 10. Okay. Correct. So it is coming. Right? Right, it is coming. Okay. Yes sir. So see out. Let me tell you, please enter the number. Right, and over here the entered number is okay, and then this is like this. So is it correct then? Right, I think it is correct. पण डायरेक्टली हे केलं तर कंपाईल नाही होणार का? कंपाईल होऊन डायरेक्टली exe फाईल बनेल? नाही सर, परत एकदा कंपाईल करा, नाही तर तोच हे रिपीट होतो, कोड न्यू नाही होत. हा काय, तो परत तेच होतोय. कंपाईल आय विल डू आय थिंक फ्रॉम हिअर ओनली ना. नाहीतर नॉर्मल ह्याच्यात हे टाका ना G++ आणि फाईलचं नाव demo1.cpp G++ ना. स्पेस demo1.cpp. अच्छा, आता झालं गुड, compile. व्हेरी नाईस. झाला demo1. एवढा वेळ देतो तो? नाही रे, हा जुना देतोय. demo1.cpp ना. I put it over like this ना. So I have to make it this statement clear ना. Please enter the number. हे दिसलं तर पाहिजे का नाही? टास्क परत एकदा बिल्ड करून बघा. तो G++ केलं तर हा एक्झिक्यूट नाही होणार आहे. तो काय, तो सेमच देतोय बघ, लास्टात देतोय. Is there any other command to compile the code? मला वाटतं हे असंच आहे काय? तेव्हा प्लीज एंटर द नंबर. नाव इट इज रनिंग राईट. ओके, आय थिंक इकडनंच आहे डायरेक्टली. पण नाही सर, स्लॅश आहे ना तो वेगळा ओके, साईड. बघा हा असा आहे G++ demo1.cpp आणि हे आहे हा असा रन करताना स्लॅश वेगळ्या साईडचा आहे. तुम्ही स्लॅश वेगळा टाकला, लेफ्ट साइड आणि राईट साइडचा. ओके, असं आहे. अच्छा, समजलं. दिस स्लॅश इज देअर. आणि आय थिंक इकडे पण ना demo1.cpp आहे, राईट. and -o that gives you the output file in demo1. So this is the command. Yes, this is the command, and then you have got this type of ha तुझा demo1 पाहिजे. Correct. Now it is coming. Okay, fine. आता हा तर एकदम क्लिअर झालं. चला राहून दे. ओके, so the students is like this, that here we have got some of the
classes. In the class we have got the members, right? And the members which are there, like these are public, right? Now is very important thing that I will tell you now. Now, submit. Okay. Yes. So there are two things. One is goes for C++ and another one goes for the Java. Now let's first understand this. What is the meaning of public in C++ and public in Java. So public is what is the access modifier. Fine. What is the meaning of access modifier? The data, the members which are in public, we can access throughout the program. Fine. But now assume that we have got one more file called as demo.cpp. Now this is a file where I am having this particular variable as public. Now I am having one more file called as demo.cpp. Now in demo.cpp, I want to access this roll number. So can I access it? Can I access this variable outside the file? Right? So in C++, the answer is no. But in Java, I can, if the members are public, they can access it outside the file as well. Right? The first difference, right? So दोनों बाजू में C++ आणि Java दोन्हीकडे काय आहे? दोन्हीकडे पब्लिक आहे. So over here I am also having public. Over here I am also having public because we are using the public static void main, right? So मेथडला आपण पब्लिक यूज करतो, इकडे पण आपण मेथडला पब्लिक यूज करू शकतो, right? It's the extension. Somehow extension we have to go for it. Fine. But now the thing is, can I access this public variable outside? So the answer in C++ no, and answer in Java is yes. Now, if I want to use these variables public outside the file, so there is a way. I cannot say I cannot access it, but there is a way. बट फक्त पब्लिक लिहिल्यामुळे आपण डायरेक्ट यूज करू शकतो का? तर C++ मध्ये नाही. तर जावा मध्ये येस, आय कॅन यूज इट आउटसाइड द फाइल एज वेल. नाउ लेट्स से अभी फाइल के बाहर भी फाइल यूज नहीं कर सकता है. सो हाउ कैन आई टॉक अबाउट द ड्राइव्स? ये हमारा प्रोग्राम है सी ड्राइव में, राइट? नाउ आई वांट टू यूज दिस वेरिएबल्स इन डी ड्राइव. सो कैन आई एक्सेस इट? अगेन नो. इन C++ नो. व्हाई? बिकॉज द स्कोप. What is the meaning of this? Is called as scope. Where to where you can access it, right? If in C++ अगर मैं दूसरे फाइल में भी सेम ड्राइव में फाइल है तो भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो दूसरा बात ही अलग है, right? But in Java, if the methods or members are public, I can access it over here as well. I can access it in a network. I can access it in a web. I can access it anywhere I want to do it. So anywhere, because the name itself suggests that it's a public. It's a public. That is a difference, major difference between public in C++ and public in Java. Right? Is there anything anybody wants to ask about this? The idea is the idea clear? Yes, sir. Yes, Sneha Jaswal, is the idea clear? Yes, sir. Okay, fine. Now, let's go for, there is one more thing, something called as access modifier में जैसे ये public है, right? The first one is, you can say, public. The second one, you can say there is something called as protected. Then the third one is something called as private. Okay, so some access modifiers. So the name suggests itself. In C++, now we are talking about C++. In C++, if the variables are public, then I can use it anywhere in the program. एक ही प्रोग्राम के अंदर आप किधर भी इस्तेमाल करो. So that is the meaning of public in C++. Now what is the meaning of protected? Protected का मतलब है, let's say my class,
there is one more class which extends this class, then I have to use this roll number inside the subclass. So can I access it? Then my variable must be protected. If my variable is protected, I can use it within the subclass. And what about the private variable? The private variable दूसरे सब क्लास में भी क्या यूज भी नहीं कर सकते. It the private variable can use it only within that particular class, only using that particular class. That is the meaning of private, right? So private, protected, and public, these are some classes. So let's see the different examples. I think over here we will shift to the again over here. Let's see the different examples. So all they are public only. Access modifiers hai. So let's see the access modifiers first. Yes. Correct. चलो अच्छा हुआ बोलने के बाद, but still I can remember all these things. Okay, correct. So public means what? Members are accessible outside the class, but within the file, within that file only, right? Private, obviously member cannot be accessed outside the class. So whatever I am telling you, it's correct only, correct? Then protected, members cannot be accessed outside the class, but however, they can be accessed in the inherited classes. Perfectly, I have told you, right? Means let's say there is one more class which is a subclass. ये बेस क्लास है और सब क्लास है. तो सब क्लास में उसको एक्सेस करने का है, एक सब क्लास में आपको यूज करने का है. देन आई हैव टू यूज दिस प्रोटेक्टेड, राइट? सो देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स इन C++, राइट? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, राइट? ये 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, राइट? नोट डाउन करो कि भाई ये 3 मेजर एक्सेस मॉडिफायर्स है, स्पेसिफायर्स है, राइट? जावा में हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है बट सी इट्स उसका स्कोप बहुत ही अलग है. दैट देयर आर डिफरेंट वेज वी कैन एबल टू डू इट. बट लेकिन C++ में थोड़ा सा हम लोग को वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का स्टार्टिंग है. C++ इज एज आई टोल्ड यू नो, प्लस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो इसके लिए हम लोग को ये थोड़ा संभाल के ही जाना पड़ेगा. वी कैनॉट थिंक लाइक वी आर थिंकिंग इट इन जावा. जहाँ में हम लोग ब्रॉड स्कोप से ये थिंकिंग कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, बट देर इज अ सिस्टमेटिक मैनर, यू नो. समथिंग गोज रॉन्ग इन C++ तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. वेयर एज इन जावा में टेंशन नहीं आता है. क्योंकि जावा में क्या है, देर इज वन लेयर कॉल्ड एज JVM, जावा वर्चुअल मशीन, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड ट्राई कैच. गार्डिंग स्टेटमेंट्स है. C++ में देर इज नो गार्डिंग स्टेटमेंट एट ऑल. अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, डायरेक्ट आपका मेमोरी हैंग हो जाएगा, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, यू नो. इट्स लाइक दैट. सो इट डायरेक्टली यू आर टॉकिंग विद दिस C++ यूजिंग C++ टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर हार्डवेयर. C++ से आप डायरेक्टली हार्डवेयर से बात करते हो. दैट्स वाई थोड़ा सा संभाल के काम करना पड़ता है, अदरवाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है. हाँ, let's see this private one, right? प्राइवेट का भी देखते हैं. सपोज आई एम हैविंग द पब्लिक तो है ही. लेट्स से आई एम हैविंग वन मोर वेरिएबल कॉल्ड एज प्राइवेट. एंड अभी प्राइवेट में क्या प्रॉब्लम आया? हाँ, यस, देयर इज द प्राइवेट. एंड इन प्राइवेट लेट्स से आई एम हैविंग द मार्क्स. So my suggestion is I do not show the marks to anybody else like that, right? It should be within the class only, anything like this. So okay, so can I have like this? So let's say I want to enter the marks. इधर तक ही जाते हैं, इधर ही मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है, right? So please enter the marks and let's say s1.marks. So let's see if I can able to, over here only I am getting the error. So आगे जाने का जरूरत ही नहीं है, because it's inaccessible only. So I cannot use the mark outside this. Why? Because it's a private, right? But if I can go over here, marks, right? And let's say this is mark 1. So
I will get rid of this particular error. Why? Because now it becomes what? Public. It becomes a public, but private, I cannot use it outside the class. So it makes sense, right? So number one point is clear. Okay, let's go ahead. Let's go ahead with this. So now we can go for here. Right, access modifiers तो हम लोगों ने अभी just देखा है. Let's see over here. What can we do for it? जैसे मैंने बोला क्लास में हम लोग ये पब्लिक प्राइवेट भी लिख सकते हैं और डेटा मेंबर्स भी लिख सकते हैं एंड अलोंग विथ इट आई कैन हैव व्हाट द मेथड्स आल्सो. जैसे मैंने इधर इसके अंदर ही मेथड लिखा है void void welcome like this, void welcome, and just say cout in welcome. So let's say I call this function over here welcome. So after this, after entering the, let's say, marks, let's comment out this. I do not want now this marks, right? After entering the roll number, let's say roll number भी आपने एंटर किया, उसके बाद में मुझे ये वेलकम मेथड बुलाने का है. So I want to call this welcome method. So if I can, the main method, if the main method can able to call the welcome method, what happened to welcome method? It is undefined. Why it is undefined? Because I have to call it using s1 dot welcome. See, s1 dot welcome. So now it is not, it will not give me any error. Why? Because this is a non-static method. Now static and non-static जो हम लोग जावा में सीख रहे थे, right? Please keep in mind the full fundamental is different of static keyword in C++ and static keyword in Java. ये बहुत बड़ा difference है. Static in C++ का मतलब है constant. Static in C++ का मतलब है constant. Whereas static in Java is nothing but it is attached to class. It is attached to class. The variable is attached to class. If I am saying the variable is static in C++, if I am saying the variable is static in C++, the meaning is the value of that variable is constant. The value of that variable is constant. Whereas static in Java shows that that variable is attached to class. दोनों में बहुत बड़ा difference है. You cannot make any sense. Static का मतलब है constant. In Java में भी static का मतलब है constant. No, not like that. तो ये बहुत आप ये ध्यान से सुनो क्या है. Now let's run this. पहले ये run करके देखते तो है. Again for running, I think the same thing we are going to do it. Yes, G++ demo1.cpp. O stands means the output file where I'm going to output it in demo1 only. So let's do it. Yes, so I'm getting this. Now the thing is that this slash and demo1. Yes, please enter the number 20. So number be 20. Okay, yes, in welcome, correct. So I'm getting this particular in welcome. So I can able to call this method, right, which is there in public. But once again, if this method it is in private, no, I cannot able to access it. How many methods I can declare? Number of methods. So let's try for one more method. Void welcome one. Let's try for this. Okay, cout in welcome one. So let's see this. Yes, so I'm having one more method. So let's call this method using the object. Okay, let's do it once again. So I clear the screen, I compile the program. Excuse me, sir. And yes. Sir, can you give an example for protected access modifiers? Yes. We are going to do it. Yes, so it is welcome one only. So actually I see what I'm trying, I am trying different types of combinations, right? So we will not stick with only one kind of combination only कि एक ही line से जाने के बजाय
एक लाइन तो हम लोग को मालूम पड़ा राइट कि ऐसा ऐसा करने का. नाउ लेट्स ट्राई फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन. इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ. लेट्स गो फॉर द डिफरेंट थिंग. ओके फाइन. So what we will do, we will create a different file altogether, demo2.cpp. Let's see this, and this is constant. So let's say my class is teacher. अभी इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं. तो लेट्स से public modifier है, and I am having int, let's say teacher id. ओके टीचर आईडी. देन लेट्स से कैरेक्टर है, बट ठीक है हम लोग पहले एक जो मे आई नो योर नेम, who told me this, who asked me this question? Sir, I'm Shruti. Shruti. Yes, Let's sir. see this. Let's see this. Okay, 1 minute. Again, I have to see the syntax for inheritance. I have to check the syntax of it. Yes, this is the syntax. Syntax मायने करता है रे. Syntax थोड़ा भी गलत हो गया तो गया. और इसमें यही है. So this thing is there, and then I have to write here public. Public, let's say, and the teacher. Correct. And let's go ahead with this. Now let's say this is a private. So I think the teacher is there, and teacher ID cannot be accessed outside the class, and I am having only teacher 1. The name of the teacher is, let's say, योगेश पांडे. ओके तो उनका आईडी है 1. सो मेरा टीचर आईडी मुझे बाहर किसी से भी शेयर नहीं करने का. सो like something like this. So now let's say over here I want to access the, let's say, the subject name. So subject name के लिए now I can use protected. Let's see how it can be used protected. Or let's say वो teacher ID हो गया. Let's say I'm having subject ID. We are now just playing with the integer values. Let's see. First of all, we will play with the integer values, and after that we will shift to the string. If we will shift to the string, and then let's say whether string data type is being used in C++ directly or no, or shall I go for the character array. तो character array में हम लोग को खेलने का है क्या string में खेलने का है? That we will stick with it after this. Okay, after this. So let's go for this one only. Over here, let's say now my method is public, or public, and then I want to write a method, let's say get subject. Fine. So my method will be get subject, and for get subject, let's say I want to print it. I want to print the subject ID which the teacher is teaching us. So if I write subject ID, so I think ये तो वेरिएबल मेरे को इधर तो मिल रहा है, राइट. आई थिंक सब्जेक्ट आईडी इज देयर. सब्जेक्ट आईडी, ओके सब्जेक्ट आईडी तो मिला. देन लेट्स राइट अ void main or int main, because main I have to define outside the class. I don't have any other way that we can go for it. Now let's say I am having a student class object. So let's have the student class object, and let's call this s1 dot get subject. Fine. बघूया करून जमतं का, येतं का काय. Okay, so let's do it, and then let's now run it. Demo2. Let's see. Okay, so I am not getting any error. So demo2, whatever. Yes, 2. I am getting 2, correct? Right? So I think Shruti आहे का कुठे? Shruti? Yes, sir. हॅलो. हा श्रुती, समजलं का तुला? Oh, sir, समजलं. हाँ, actually what we did only the protected, and now see over here you cannot have like this, right? So if I try to, let's say teacher ID, right? Teacher ID मैं इधर नहीं कर सकता हूँ. You can get the error immediately.
डेडलाइन देते, म्हणजे तुम्ही इधर रन करके और कंपाइल करके फायदा ही नहीं है, right? You are getting this because this teacher ID is a private, so private data I cannot be accessed over here, right? But I can access the data which is protected, right? So this is my base class, this is my parent class, base class, right? Class student is my subclass. Class student is my subclass. So this is the subclass of teacher class. So what is the operator is that colon is the operator, राइट? सो दिस इज हाउ, सी हम लोग इसमें कैसे करते हैं, क्लास टीचर एक्सटेंड्स क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स टीचर, राइट? इन जावा व्हाट इज द सिंटैक्स? in Java the syntax is class student, right? Class student extends teacher, right? So this is the syntax in Java, right? Over here what is the syntax? The syntax is colon, and I have to write here public, right? If I don't write public, what is going to happen? I cannot access the class, right? लेकिन public का भी scope है. What is the public scope? Public scope is within the file only, so you know a lot of restrictions are there in C++, in sorry, not C++, in yes, C++ programming. In C++ programming lot of restrictions are there, right? इसके लिए बोला ना कि the thinking in Java, you put it in separate bag, you know, the thinking in C++ you keep it in separate bag, right? पूरा अलग है, right? Syntax and everything, even if they are same, even if the you know, C++ concept is also a common for C++ as well as Java, but once you are talking about the kind of project, if you want to do it, so let's say this is the first point. ये पहला पॉइंट है कि जिधर हम लोग अभी you can think about the kind of project. So let's say I want to keep a record of teacher student relationship. So I'm having a teacher, so I'm teaching you the C++ and so forth. So let's say Gupta sir is a teacher, right? So उसका teacher ID 2 है, and he's teaching a subject so and so forth. So now let's make a relationship, you know, there are a lot of students, so I may have the lot of students data. So let's try for it. Okay, पहले try करते हैं. Let's again go for this. ऐसा ही एक छोटा सा गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट का सिंपल प्रोग्राम करते हैं. लेट्स फाइंड इट आउट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डू इट इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज डजंट, बट ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सिंटैक्स थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा. सो लेट्स से नाउ आई एम हैविंग अ टीचर, राइट? सो टीचर इज हैविंग द पब्लिक modifiers. So public इसमें what they can have the semicolon, yeah? They are having the data called as get teacher data. So let's say get teacher data, and now we will get it. Please enter the teacher ID. enter करो, then input करो टीचर आईडी, यानी अभी ये वेरिएबल है. नाउ दिस वेरिएबल आई हैव टू डिक्लेयर इट इन पब्लिक. इधर मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा तो ही वो लेगा, राइट? लाइक दिस. सो नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एरर. सो टीचर आईडी लिया, देन एक काम करते, स्ट्रिंग है क्या देखते हैं. लेट्स चेक स्ट्रिंग इज देयर और नो. हियर इट इज रिटन हियर स्ट्रिंग. So let's try for it. Anybody has tried string data type in C++? Yes, Varad or Kushal? सर आधी केलेलं, आता नाही केलं मी. नाही, पण स्ट्रिंग ट्राय केलंय का? स्ट्रिंग VS कोड मध्ये माहित नाही मला. आधीच्या ह्याच्यात केलं, VS कोड मध्ये नाही. C++ मध्ये मी तर फार पूर्वीच्या काळी केलेलं, तर मला ते ना एवढं आठवत नाही. पण लेट्स ट्राय फॉर इट. चलो ट्राई करने में क्या है यार. तो string teacher id equal to null, so I take it as null, so I declared it as null like this. इकडे आता पण I can initialize the value, that's why I have written like this. Okay, so it doesn't make any sense, so please enter the teacher name. Let's see over here. Teacher underscore name. I think
it is not giving me anything. So I think string is used in C++, I think. Okay. Let's try this program. A program try करते हैं पहले, and then we will continuing with this thing. Huh? Let's try for this. Okay, पहले इसका ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, teacher t1 and t1 dot get teacher. Yes, so I can get this. Okay, fine. Let's see this. Demo 3 and demo 3. So I think it is also giving the string data type. So it's good. Right, teacher ID is 10, teacher name is Yogesh. Fine. Fine, so it is getting this. Okay, so cout में उसको print करते हैं. So there is, you can say, one more method I can write called as put teacher, or let's say display teacher data. Display teacher data. Let's have this method like this. ऐसा method लिखते हैं, and over here we just display the data. Cout the teacher ID is let's say teacher ID, correct, and concatenated with this space teacher name colon, and over here let's say teacher name. Okay, and let's call this method using the same t1 dot display teacher. Okay, let's do this. Demo 3. Teacher ID is 1. Teacher name is Yogesh. Yes, so I'm getting this teacher ID 1 and teacher name is Yogesh. So let's say I want to call once more. So can I have this T2? Can I have this object T2? Let's say I'm having object T2, and T2 is now calling get teacher, right? So what I'm trying to add, one more teacher and display teacher. So let's see it. Is it going to work for me? Right? G++. Let's run the program. Teacher ID is 1. Name is Yogesh. Right? So it is printing, correct? ID is 1 and teacher name is Yogesh. And again it is asking, no, it is T2. T2 is asking teacher number 2 and teacher name is, let's say, Dr. Gupta sir. Right? So it is taking like this, So let's say if I want to add 10 different teachers, so क्या करना पड़ेगा? Anybody कुशल? Yes, sir. 2 टीचर ऍड केले ना मी, T1 and T2, बरोबर आहे? हा, ऍक्च्युली पिक्चर कसा झालाय बघा. पिक्चर नाव आय विल शो यू द पिक्चर. इट्स लाईक दिस. सोम हे लाव ना पटकन. हे लाव ना. बॅटरी गेली. सावकाश, हळूहळू सावकाश. नाही झालं, बघ ना, नाही झालं, बघ. बटन चालू आहे. लाईट गेले का बघ ना. अरे ह्याच्यामध्ये जा त्या एरो मध्ये जा. एरो मध्ये जा. अरे मला माहित. ठीक आहे. फाईन, इट्स फाईन. चार्जिंगला लावलं लॅपटॉप, बाकी काय नाही. Yes, so the thing is like this. See, I am having inside the memory, I am having the object called as T1, and inside a same memory but in different area, I am having a object called as T2.
Now what happened in T1? In T1, whatever the variables which are there, like TID and TNAME, right? TID and TNAME. So these variables which are public, so these are added to this object. मैंने ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो इमीडिएटली क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट्स से T1. So whatever the properties are there, properties means whatever members are there, these are getting embedded with this, right? So TID, what is the value of ID by default? By default it's 0 only. So I by default initialize किया है, ये भी null किया है. So ID equal to 0 and name equal to null value. ये तो मुझे इधर मिलेगा ही मिलेगा, right? If I just create object T2, तो T2 के लिए भी same thing is over here. Now obviously in memory there is again a part of memory which is called as heap memory. Now ये heap memory का नाम जो है वो C++ में भी सेम है और Java में भी सेम है. You will not say like this, कि Java में heap memory है, where I was telling you that in heap memory the objects are being created. In stack memory, the lot of variables and the method name which is going to be stored in stack. Right over here we know it, right? T1 and T2, these are the two objects, right? Now over here teacher T1, इतना लिखा तो भी sufficient है. Teacher T1, this is a sufficient statement to instantiate an object of a class, to initialize the object of a class. In Java में आप आपको क्या करना पड़ता है? Teacher T1 equal to new teacher T1. If you can recollect this, new teacher T1, and without new you cannot create an object of a class in Java. Java में new operator आपको compulsory लगता है. In C++ में no. Teacher T1 okay. Teacher T1 हो गया, उसका ही मतलब है T1 नाम का object create हो गया in heap memory, right? And why I have taken Java first and then object oriented in C++? Because of the same reason. क्या होता है, स्टूडेंट के दिमाग में फिर है ना C++ का आइडिया फिट होता है. Yes, इधर न्यू यूज नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, बिकॉज इट्स वी हैव गॉट लॉट ऑफ ग्रामर तो उसमें भी है, लेकिन लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर इन C++, राइट? जो रिस्ट्रिक्शन C++ में है, इसके लिए C++ इज नॉट कॉलिंग एज अ ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही नहीं C++. व्हाई? बिकॉज इटसेल्फ इट शोज कि मेन मेथड में आउटसाइड क्लास डिक्लेयर करता हूं. तो हाउ द क्लास मेन मेथड इज अटैच टू क्लास? मेन मेथड क्लास को अटैच है क्या? इसमें C++ में है ही नहीं. Why? Because these both are separate only. Which C is a structured programming oriented language, और उसमें C++ वो लोग ने object oriented अंदर घुसाया है C के अंदर. So we cannot say C++ is a truly object oriented language, but whereas in Java it's a truly object. अभी truly object है तो पूरा object का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग कॉल कर सकते हैं. There are a lot of things that we can do it in only object oriented, that we cannot do it in C++. That is a restriction. And that's why I first of all taught you Java classes. Java classes में क्या क्या है, right? Last time I told you, last time I left, what kind of classes we are going to study, like abstract, final, and so forth. Lot of things are there inside only in object oriented. और उसमें जो मजा है वो इसमें नहीं है. C++ में obviously नहीं है, because it's totally oriented on structured. Right, and that's why you will find out lot of differences. So this is one difference, please keep it in mind. New operator in Java, and here don't require any operator. We are having only teacher T1. So teacher T1 sufficient है, comma T2, comma T3, comma T4, right? So अभी हम लोग का कहना ऐसा है, कुशल को मैंने अभी वो सेम क्वेश्चन पूछा. So let's say I want to go on creating the 10 objects or 100 objects. Then what I'm going to do, Kushal here? Can you tell me? Shall I go like declaring the T1, T2, T3, T4 up to T100? Is it correct? नाही, हाँ, मग काय करावं लागेल? इनिशियलाइज करतील ना एक पर्टिक्युलर, Object आणि मग त्याच्यानंतर नाही, ऑब्जेक्टचा अरे बनवावा लागेल ना मला. हा अरे बनवून मग त्यांना लूप मध्ये टाकायचं. लूप मध्ये टाकणार ना. परफेक्ट. म्हणजे मला असं काहीतरी बनवावं लागेल इकडे, है ना? ओके, आणि मग ते लूप मध्ये टाक आणि तू काय पण कर, बरोबर आहे? हो.
नंबर ओके मग युजर आता कडून घ्यायचे मग किंवा ओके ओके करेक्ट करेक्ट. मग ह्याचा आपण सिंटॅक्स आणि हे सगळं आहे ना ते परत पुढच्या लेक्चरला बघूया. आतापर्यंत एवढं खूप झालं राईट. आज आज आपण काय काय बघितलं, व्हॉट व्हॉट वी स्टडीड राईट. ॲज वी नो द ॲक्सेस मॉडिफायर्स इन C++, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड अँड पब्लिक, हे 3 ॲक्सेस मॉडिफायर्स आहेत. देन द सेकंड थिंग इज हाऊ कॅन यू डिक्लेअर द क्लास, how can you declare the class, how can I inherit the class, how can I inherit the class, right? And if I inheriting the class, so just now I told you, right, this is a protected, then only I can able to access it. So base class and subclass, the syntax we studied. And then something called, how can you create an object of a class, and how can you call the different methods from the classes, right? So only this much we studied, but lot of things are there ki see why I'm trying in front of you, trying in the sense ki I'm go on doing the program in front of you, because same thing I'm going to tell you, that you also try it from your side. आप जब भी प्रोग्रामिंग चालू करते हो ना, तो ऐसा सोचो मत कि ये प्रोग्राम मैंने किधर देखा है और ऐसा प्रोग्राम में टाइप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. राइट, यू जस्ट गो ऑन थिंकिंग, आस्क युअरसेल्फ, चल मला आता पब्लिक मेथड बनवायची, कशी बनवू, लेट्स गो फॉर इट, चलो बनाते. राइट, अभी बनाने के लिए क्या मैंने किया, मैं भी सी आई एम ट्राइंग टू पुट माय सेल्फ विथ यू. जसं तुम्ही पण नवीन नवीन शिकता असं धरून चला, तर मी काय म्हणा, चला याच्यामध्ये काय लिहिलंय, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस. चलो ये लोग ने स्ट्रिंग इस्तेमाल किया, सो कैन आई टेक अ स्ट्रिंग इन माय वॉट एवर आई एम डूइंग, लेट्स डू इट. चलो करते हैं, करून बघायला काय हरकत आहे, राइट. सो इट डजंट मीन दैट आई जस्ट कॉपी दिस प्रोग्राम, मैंने ये प्रोग्राम कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट किया, एंड नाउ जस्ट ए का बी लिखा है, इंटीजर उधर ए, इधर मैंने बी लिखा है, एंड लेट्स डू एंड प्रोग्राम. ऐसा नहीं है, डू नॉट डू लाइक दिस प्लीज. ये ऐसा प्रोग्रामिंग करो मत, ऐसा प्रोग्रामिंग किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट. डू द प्रोग्राम लाइक द वे आई एम ट्राइंग टू डू इट, राइट. तो इवन दो यू विल से आता अभी तो मैं आपको बोला जैसे मैं डार्ट प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, डार्ट में कैसा है, C++ भी है, जावा भी है, तो उसमें तो सिंटैक्स कैसा है मालूम है, आई विल जस्ट टेल यू, डू नॉट कीप इट इन योर माइंड ऑल्सो, है ना, यू विल गेट कंफ्यूज. इसमें कैसा है मालूम है क्या, टीचर T1 इक्वल टू टीचर, इट्स वेरी सिंपल, और हियर दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे किया है देखो. हाँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू. हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ये, टीचर T1, जावा में क्या लिखते हैं हम लोग, न्यू टीचर लिखते हैं ना. अभी इधर न्यू का भी जरूरत नहीं है क्या, लेकिन ये जरूरत है, दिस कंस्ट्रक्टर आई हैव टू राइट, ये सिंटैक्स है डार्ट का, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यानी दोनों आ गए ना. ये C++ का सिंटैक्स है, राइट. एंड न्यू टीचर यानी कंस्ट्रक्टर लिखो और ये करो, दिस इज जावा का सिंटैक्स है, दोनों को मिक्स किया, राइट. So like that, so this is how it's a next step for you people, how can you go further, right. तो धीरे धीरे करने का, अभी सिंटैक्स में कैसा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसे अभी मैंने बहुत टाइम पे मैंने ये भूल गया था कि मैं रन कैसे करने का. सो लेट्स टेक अ हेल्प ऑफ युअर फ्रेंड्स ईच अदर्स, उनको बोलो की भाई हे कसं लिहायचं, हे कसं आउटपुट कसं आणायचं, G++ मध्ये कसं लिहायचं, राइट. थोड़ा if you are asking to your friend or you are you are taking the help of anybody else, it doesn't mean that you are go low, नहीं, आपका लेवल कम हो गया और वो हाईएस्ट लेवल पे, ऐसा है ही नहीं. Are you getting, you are somehow different kind of thinking level, personality, and the other one is different kind of personality. So don't think like this angle, right. Ask each other, ज्यादा से मैक्सिमम पूछो. सी आई एम नॉट शाइंग टू आस्क, मी कुशलला विचारायला मी हे लाजत नाहीये, असं नाही म्हणा, अरे बाबा मी टीचर आहे, मी कसं त्याला विचारू, तो मला काय बोलेल की सर तुम्हाला एवढं पण येत नाही का, असं काय नाही. आर यू गेटिंग इट. सो ऑलवेज आस्क, इट्स व्हेरी इट्स अ, यू हैव टू बिकम फ्री लाइक दिस ओनली. अगर आपने पूछा नहीं ना किसी को तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. सो आस्क योर फ्रेंड्स, ask your teacher, ask your younger students, और घर पे कोई अगर जैसे व्हाइट व्हाइट प्रोग्रामिंग बहुत जन सीख रहे हैं मालूम है. सो वन ऑफ माय नेफ्यू इज ऑल्सो डूइंग दैट, राइट. सो ही इज डूइंग बेटर प्रोग्रामिंग, फटाफट प्रोग्रामिंग करते हैं, 9th स्टैंडर्ड में एंड ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग. सो मैं होता अरे यार जबरदस्त आहे. सो आय एम आस्किंग हिम ऑल्सो. सो आय एम नॉट सेइंग अरे मी तर इंजिनियर झालोय, मी तर एवढे वर्ष काम करतोय, एवढे वर्ष जॉब करतोय, असं काय नाही. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देअर,
right? And even everybody is human being, right? So what I'm trying to say, try to come up with these solutions, राइट. सॉल्यूशन कैसे करने का, अभी जैसे मैंने एक पार्ट मैंने इधर करने का भूल गया है और मैं आपको मैं बाद में कराऊंगा. सो कुशल एंड आदित्य, प्लीज रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट आई एम ट्राइंग टू वी आर ट्राइंग टू गो फॉर लाइक द सिंपल प्रोजेक्ट वी कॅन से, राईट. जसं मी सांगितलं टीचर स्टुडंट रिलेशनशिप, ते मला आठवण करा, राईट. आणि गुप्ता सर तुम्हाला हा सब्जेक्ट शिकवतात, पिंगळे सर तुम्हाला हा सब्जेक्ट शिकवतात. मग हाऊ कॅन यू मेक अ रिलेशनशिप, म्हणजे तुम्ही मग आउटपुट कसा दाखवाल, हाऊ कॅन यू शो द आउटपुट, यू नो. गुप्ता सर टीचिंग दिस सब्जेक्ट्स एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, एंड पिंगले सर का ये सब्जेक्ट है, इनके स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे, राइट. हाउ कैन यू गो टू दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोजेक्ट, एंड इवन दो वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ फाइल हैंडलिंग ओवर हियर. ना फाइल हैंडलिंग हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, ना JDBC इन जावा इंट्रोड्यूस किया है, वेयर यू कैन कीप द डेटा परसिस्टंट. परमनंट डेटा ठेवायचा असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, यू हॅव टू यूज डेटाबेस इन C++, यू हॅव टू यूज फाइल हँडलिंग. मग फाइल हँडलिंग, आणि ते आपण आतापर्यंत अजून केलं नाहीये, कळलं. पण यू कॅन गो फॉर इट ना, यू कॅन गो फॉर इट. डू नॉट वेट फॉर माय इन्स्ट्रक्शन, यू नो, बिकॉज फाइल हँडलिंग अँड हे सगळं डेटाबेस आणि हे सगळं नाही तुम्हाला आता सिलेबसमध्ये नाहीये. यू डोंट हॅव द इन द सिलेबस, यू नो. बट ॲटलीस्ट ये प्रोजेक्ट, छोटासा कुठला तरी प्रोजेक्ट बनवला, छोटासा प्रोजेक्ट, अ व्हेरी सिम्पल प्रोजेक्ट, यू नो. You keep the list of teacher student and you put it in file handling. Even I restart the computer and I want to retrieve the record. Menu driven type. I want to show it in menu driven. Menu driven चा प्रोग्राम तुम्ही कधी केलाय का आतापर्यंत? येस कुशल. जावा मध्ये केलेला टेक इंटरव्ह्यू आहे. अच्छा, जावा मध्ये केलाय. अच्छा, दुसरं कोणीतरी केलाय का? सो जस्ट आज तू ती मगाशी होती ती कोणती, स्नेहा जसवाल. Yes, sir. हाँ, तू ऐसा कोई मिनी प्रोजेक्ट वगैरह ट्राई किया क्या? No, sir. हाँ, तो ट्राई करने हैं ना, अभी ये सेमेस्टर में हम लोग ट्राई करते हैं ना. We have got lot of time. We have got lot of time now. You are at home only. तो आता तुम्ही थोडासा जास्त विचार करून ना, ज्यादा सोच के हम लोग थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं. जैसे अभी मैं बोला ना, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, एंड लेट्स गो फॉर फाइल हैंडलिंग. सेम थिंग वी विल गो फॉर द JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, राइट. सो आप खुद से ट्राई करो, है ना. यू कैन गेट अ हेल्प ऑफ दिस. ये देखो फाइल्स, फाइल हँडलिंग, हे बघा इकडे फाइल हँडलिंग. सो आय एम हॅव्हिंग एफ स्ट्रीम म्हणजे फाइल क्लास झाला. मग तू यूज कसा करायचा, लेट से आय ओपन टेक्स्ट फाइल आहे. सो टेक्स्ट फाइल मध्ये डेटा ठेवायचा कसा, हाऊ कॅन आय ओपन द फाइल, हाऊ कॅन आय क्लोज द फाइल. न हे झाल्यानंतर लेट्स डू इट इन युअर प्रोग्राम. मग हे बघितल्यानंतर असं जे असं सिंटॅक्स पार्ट करून तिकडे नका लिहू. लेट्स ट्राय इट ऑन युअर ओन, कळलं. ते तुम्हाला करायचं, दॅट विल बी युअर नेक्स्ट स्टेप. आय थिंक वी विल स्टॉप नाउ. ओके, या वीक मध्ये बहुत हो गया. आई थिंक सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिस्ट ऑल्सो आई हैव टेकन इट, राइट. इन C++ देर वॉज सम एक्सपेरिमेंट, राइट. आदित्य, आय थिंक एक्सपेरिमेंट होता ना, कुशल किंवा हा वरद. हो, तुम्ही अपलोड पण केले. हा, नाही, एक्सपेरिमेंट लिस्ट पण होती, पण एक्सपेरिमेंट लिस्ट मध्ये आपलं C++ हे पण होतं ना, की क्रिएट अ क्लास और ऑब्जेक्ट अँड कॉल देम. हा पण मला वाटतं 1-2 एक्सपेरिमेंट होते वरचे. हा, तर मला वाटते हे सेम एक्सपेरिमेंट यू कॅन गो फॉर इट ना. मी हे आपल्या गिटहब मध्ये टाकतो, हे 2-4 प्रोग्राम C++ चे, राईट. अँड प्लीज एक्सेस दिस प्रोग्राम, ओके. येस सर. या प्रोग्रामला थोडं मॉडिफाय करून यू गो हेड विथ द फाइल हँडलिंग अँड सो फोर्थ, राईट. आपण करूया ते, राईट. यू डोंट वरी, आगे जाएंगे. लेकिन लेट्स सी. ओके, सो आई थिंक माय नेक्स्ट लेक्चर इज व्हाट, व्हेन? मंडे.